very important for an individual or a candidate who is coming to UAE. Yes. Right. Any more question? I think I should open the floor for questions now because we are already running short on time. And there are certain other areas that I really want to talk about क्योंकि अभी हमने salaries पे बात इमरान ने तो कर दी है, मोना की तरफ से रहती है, and इसके अलावा जोन सा है हमने थोड़ा सा लाइफस्टाइल के ऊपर भी बात करनी है कि यूएई में लाइफस्टाइल क्या है और उसके रहना सहना उसके मतलब मंदरजात जोन से वो सारे वो डिस्कस करने हैं. But I'm gonna take questions now. All right, so the first question we have here is from Dr. Hafiza. Is there need of any data flow verification for documents in Kuwait? जी मेमूना. जी बिल्कुल, यहाँ पे अभी जैसे मैंने पहले मेंशन किया, यहाँ पे एक वेबसाइट है ISVSC, उसके थ्रू आपको रजिस्टर होना होता है एज अ प्राइवेट एम्प्लॉयर, नॉट एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयर. वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर में यहाँ आने के बाद डेटा चेक होता है. प्राइवेट एम्प्लॉयर जो है पहले डेटा चेक करते हैं, एम्प्लॉयर लेटर लेते हैं और उसके बाद आप अपना एम्प्लॉयर लेटर के थ्रू अप्लाई करते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज डेटा चेक थ्रू ISVSC. Or the documents required are your degree, your transcript attested from Kuwait and Pakistan, and your previous job experience letter valid, and up to 2 years, minimum 2 years job experience valid document. Perfect. All right, the next question is from Umar Chima, and I think probably it's for Imran. कि यहाँ कैटेगरी की बात हो रही है या लाइसेंस की बात हो रही है? There is no difference, or you can say it's only use one term, license. There is no category. You can say there are 3 category in terms of license. So we definitely pharmacists need license. Category, MOH, DHA and HAR. That are the category based on a regional requirement or the state requirements. So I'm not sure if it is clear or no, or any more question relevant to category, but there is nothing category separately. Of course, ये चीज जो है ना अक्सर बच्चों को समझ नहीं आती है कि कैटेगरी क्या है और लाइसेंस क्या है. वो पाकिस्तान में ये सिलसिले डिफरेंट तरीके से चलते हैं. बहरहाल वेरी वेल सेड. I can add 3 more things probably. One is a pharmacist license, one is a trainee pharmacist license, and one is clinical pharmacist license. This is another category. If we look into like subdivisions and all those things, that's all, nothing else. Perfect. All right, Mamoona, आपके लिए है how much salary आगे बात paid to pharmacists in Kuwait. मैं हाइट से लेवल ऐसा कुछ नहीं था. I just missed it. अगर आप असिस्टेंट के तौर पे काम करें तो depends on employer. अच्छे employers हैं, specialized hospital है, तो they will give you just 250, starting from 250, depends on your skill. If you're taking insurance, if you're taking other things, up to 350. And some good like retail pharmacists giving you 350 KD, and once you get the license, you're according to labor law, you will get the salary, 8 hours your duty timings. In assistant, during assistant, like you have to work 9 hours sometimes because you're not following the labor law. Once you are registered under Ministry of Health Kuwait, then you will get your license from the Ministry of Health Kuwait, and you are under the labor law, and according your salary will be according to labor law, and that is around 650 plus, like not minimum 650. And how much am I looking at? 7 लाख बन जाएगा, 6 लाख तकरीबन 6 to 7 lakhs और almost पाकिस्तान का. लेकिन that is excluding extra because in labor law they are giving us indemnity also. आप 1 year complete करते हैं, उसके बाद आपकी कुछ percentage की salary at the end of the year आपको count मिलती है extra. उसके बाद बोनसेस हैं. रिटेल में काम करते हैं तो कमीशन बहुत अच्छा आता है, आपकी सेल्स. वही बात, अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो आपकी सैलरी जो है वो 1000 तक पहुंच जाती है रिटेल में. और क्लिनिकल उसमें कहीं भी काम करते हैं आप तो मिनिमम 650 यू आर गेटिंग. एंड हॉस्पिटल्स, इफ यू आर वर्किंग इन हॉस्पिटल, दे गिव यू सम रेंट, दे विल गिव यू अ फ्रैक्शन ऑफ सम योर लाइक पर्सनल यूज आइटम, जैसे फोन को दे देते सब. तो इट्स अ गुड 650 मिनिमम. नाइस, माशाल्लाह. And do you think it's enough from the Kuwaiti perspective? I mean, how much saving are you going to do after
after this much ये बहुत salary? expensive है like this Kuwait. You're paying if you're having a small room apartment, just I'm going to mention it. अगर एक small room apartment है, so you're paying 200 KD minimum. One room apartment you're paying 200 KD per month. Or if when you spare some 100 KD for your grocery and like this, so you're just left with, if you are doing as assistant, so don't think of like you can keep your family here and your Hmm. you can bring your family here, because for the family you have to be minimum 500 जो है वो आपका सैलरी होनी चाहिए, Salary और होनी इसीलिए चाहिए. अब तक आपको फैमिली वीजा अलाउ ही नहीं करती, यू कैन नॉट ब्रिंग योर फैमिली, सो 350 इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द असिस्टेंट. आप अकेले आके काम कर सकते हैं, लेकिन Hmm. प्लस 350 अगर है और यू आर हैविंग अ फैमिली देन Hmm. आपका लाइसेंस हो जाता है, देन इट विल बी अ गुड वर्क, you can manage your problem. Perfect, perfect. Nice. The next question is from again Josefa Zia. Sir, which test is easy to pass? DHA, MOH, hard, and which one of these is best for getting a job? Ji Imran. Well, all the tests are easy if you study well in graduation. And the best, as I mentioned, the most easiest or the fastest process is DHA. Then you can convert, once you are here, you can convert DHA to hard, or you can convert, or your employer who is in Abu Dhabi says that I can convert your DHA to hard, or I can convert your DHA to MOH. So all are easy. You cannot assume the question will be coming as a definition or point of view. For sure, they are evaluating your 5-year study. So minimum requirement, you should fulfill it. There are a lot of question paper available online. You can study. But as I explained you already, you must have pharmacology, pharmacy practice, some calculations and all. Basic things you should have. Organic chemistry, they are not going to ask at micro level. Right. The next question again, Dr. Hafiza. When fresher will come to UAE as fresher, he must have degree and pharmacy council license. Yes, I think that Yes, was all. of course. Yes. Yes. It has already been discussed before. The next question is from Sohail Amir. Throw some light on sales and marketing, please. इस पे थोड़ी बात हुई है, लेकिन अगर आप कोई और कमेंट करना चाहते हैं इमरान, sales and marketing. यस बेसिक सेल्स एंड मार्केटिंग, जैसे कि अगर आपने एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऑलरेडी काम किया, जीएसके, एबट में या नोवार्टिस में, और अगर आप एक अच्छी पोजीशन पर एक कैटेगरी में, मींस यू आर मैनेजिंग हार्मोन्स, यू आर मैनेजिंग डायबिटिक प्रोडक्ट्स एंड ऑल, और वहां पर आकर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी एंड ऑल दोस थिंग आप एक अच्छा प्रेजेंट करते हो. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ यू आर गोइंग टू शोकेस योरसेल्फ व्हेन यू आर गिविंग इंटरव्यू, और हाउ यू आर presenting in the CV yourself. That's very important. So आपको job मिल सकती है within 3 months time. You can driving license and you can move on. People get job, but this is not common as retail or community or hospital pharmacy job. Right. Again, Nimra का भी similar question है. What's the scope of pharmaceutical marketing in UAE? तो I think वो इमरान ने already explain कर दिया है. The crucial thing is about your driving license. If you can get it. जी मैं मोना. बस यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी मैं, ये मार्केटिंग यहाँ पे अभी एक आपने देखा है कि सोशल मीडिया और टेली मार्केटिंग का हमें लाइसेंस मिल गया है यहाँ पे यूएई कुवैत में. तो सोशल मीडिया मार्केटिंग और टेली मार्केटिंग इसमें इसकी लाइसेंस्ड है यहाँ पे अब, मतलब यू कैन प्रैक्टिस दैट. तो उसके लिए आपकी एक स्किल जो है यहाँ पे आप ओवर द फोन यू कैन टेक ऑर्डर्स, ओवर द फोन यू कैन आप कंसल्टेशन दे सकते हो. आप लाइसेंस्ड होते हो तो आपको किसी टाइम भी कॉल आ जाती है, लाइक मुझे ये हो रहा है, मुझे कफ है, मुझे ये है, तो आपको सिम्टम एनालिसिस करके मेडिसिन देनी पड़ती है. तो यहाँ पे टेली, इसके साथ एक स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग के लिए. मार्केटिंग की जब स्पेशली बात हो रही है, सोशल मीडिया आपने कैसे हैंडल करना है, मतलब आपने मार्केटिंग कैसे करनी है अपनी प्रोडक्ट की. मार्केटिंग पर्सनली भी होती है और मार्केटिंग ऑन सोशल मीडिया भी होती है. तो उसके अगर आप जिस तरह अभी मतलब वर्क ऑनलाइन का बहुत कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे लाइसेंस्ड हो गई हैं फार्मेसीज के, वो ऑनलाइन वर्क कर सकती हैं इन सेंस के आप वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हो, बट सिर्फ फार्मासिस्ट. तो आपको अगर ये स्किल आता है, आपको स्किल है कि आपको कौन से विटामिन हैं, वो किसके लिए कितने हैं, और ये सब नॉलेज जो है ना, ये आपको पढ़ने से आएगा, आपको थोड़ा सा आएगा. तो ये मार्केटिंग में बहुत हेल्पफुल है.
आप वाइटामिन पे आपको ध्यान से पढ़िए कौन सा अभी ये हर्बल्स का और वाइटामिन स्पेशली आफ्टर कोरोना बहुत ज्यादा जो है वो मार्केट रिटेल में इसका बहुत ज्यादा है। उसके अलावा कुछ बहुत से सप्लीमेंट्स जिस तरह आ गए हैं, वो सप्लीमेंट्स के ऊपर आपका एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए मार्केटिंग के लिए। और मार्केटिंग स्किल्स आपकी सोशल नेटवर्किंग पे भी अच्छी होनी चाहिए, तो फिर देन यू विल गेट अ Hmm. पर्क्स, Hmm. अच्छी That's आपकी nice. हो जाएगी। Right. Okay. The next question is from Stylish with X Malik. He's saying that MOH, DHA और हाद इन तीनों के अंदर comparison क्या है salary wise? Um, I think I have mentioned that the highest paid salary is Had, Abu Dhabi region, which is on an average 7,000. Dubai, you can say 4,500, and MOH, it's 4,000 to 4,500 on an average. This is your starting salary. Within Right. 6 months, you can get even 20-25% increment based on your skills, company, and all, and responsibility if you are taking. Keep in your mind, salary does not increase without taking further responsibilities. If you take additional responsibility, then salary will increase. Salary will not increase on the same designation so easily. All right. The next question is pharma industry में job करने के लिए कोई license required है UAE में और salary कितनी है? It's a similar situation as Mona has mentioned earlier. Since it's one pharmaceutical company in UAE, there are 3-4 pharmaceutical companies. Scope is limited. Yes, license is required. Dubai has one PharmaX company which is now available, and Northern Emirates has Julfar. So its MOH and DHA is required when you are working in certain department. But if you are in quality assurance and few others may not require. So it depends on post or designation where you are going to get a job. Some of the companies, they will allot you like for a verification purpose to check the whole process and everything, where pharmacist licenses signature is required. It means you need to have your license number as well. That in each industry, probably you can say 2 to 5 pharmacists who has license are available. Rest all are non-licensed pharmacists. Right. काफी comprehensively आपने answer कर दिया. Thank you very much. The next question is Rimsha Nasir. DHA exam clearance is necessary if someone wants to go for a trainee pharmacist. So, yes. For a trainee pharmacist, DHA exam is not required. You can get registered as a trainee pharmacist immediately after your graduation. Come to UAE, but bring your degree as well as pharmacy council license. These two documents attested is required. Third, you need to have a job, which company you're working, and NOC from the company. Let's say you're working XY pharmacy or XY hospital. That hospital or pharmacy should give you no objection certificate to get registered. So basically, either you need to get a job before coming to Dubai, or you can get a visit visa, and then find a job and then convert it again into a work visa. How does this work? 1 year back, that was, yes. So first option, as you said, you can get the job and come to UAE. This option was available during the COVID time. People were getting interviewed over the Zoom or Microsoft Teams and all, and they get directly hired. But now the scenario has been changed. You need to come as a visit visa and get your job. You will not get a job before coming to UAE. That's very rare. Right. Perfect. All right. Ali Arslan कह रहे हैं, can a fresher get a job easily there? Well, yes, you can get a job easily if you convince the interviewer in the first impression. You can. Why not? Nice You are you are answer. you are Plus you the have skills. very good degree available with you. You have personality. You have a good communication. That 2 or 3 minutes are important to where you are going to give an impression. What did you study in the last 5 years? That is a 2-3 minute, which we usually say 2 minute pitch elevator, something kind. So you should do a practice for that. What you're going to talk about? Are you going to talk about
about a salary first level? Are you going to talk about skills? Are you going to talk about what you are going to make a change in the organization? What is your aspiration after 6 months when interviewer asks you what you want to be in your life? And we will say probably I want to be a father. He does not have any connection in your personal life. Yes, you can be a father anytime, but in his company, what you want to be. So that questions are it's very, very, very important to answer. So I strongly say that first, you should have very strong CV. We undermine our skills and capacity and the degree, and we just make one and a half page CV with the very minimum standards of communication, with a lot of errors, and we present to interviewer. If I will be the interviewee and Umaid is the interviewer, he will not select me because he look at my CV first. So CV is very important. Showcase yourself in a right manner. Showcase as with in a quality manner what you are going to do. What did you do? What you have been doing since last 5 years. So again, coming to the first point, you can get a job in 2 minutes, or you cannot get a job in 6 months. Choice is yours. It's in your hand. Nobody is going to decide you. Very well answered, Imran, and I had to again stress on that similar point कि मैं अपने स्टूडेंट्स को जो है ना बार बार ये चीज़ इनकलकेट करने की कोशिश करता हूँ कि जस्ट इमेजिन करो कि कोई भी बच्चा ये नियत लेके एग्जाम में नहीं जाता कि मैं फेल होना है, आज मेरा दिल कर रहा है मैं फेल हो जाऊँ, और दूसरा उसकी कोशिश भी मैं समझता हूँ कि नैले से नैला भी बच्चा हो ना तो वो भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कोशिश करके ही आता है, एग्जाम देने के लिए पढ़ने के लिए आता है। तो नियत और कोशिश दोनों की होती है, हर तरह के बच्चे की होती है, लेकिन फिर जब रिजल्ट आता है ना तो रिजल्ट डिफरेंट क्यों आता है? किसी का ए ग्रेड आ रहा है, किसी का बी, किसी का सी, किसी का एफ आ रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि यार देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस इन योर इन द वे यू डू थिंग्स, ठीक है, और उसमें सिर्फ आपकी नॉलेज जो है ना वो मैटर नहीं करता है, आपकी बहुत सारे और सेट ऑफ स्किल्स भी हैं जो मैटर करते हैं। आप यूनिवर्सिटी की चार दीवारी में एक डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स के साथ कामयाब हो सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी की चार दीवारी के बाहर जो सा है उसके लिए कामयाब होने के लिए यू नीड अ डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स। उसके अंदर आपकी पर्सनैलिटी, आपकी इंटेग्रिटी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी जो सा है रख रखाव, आपका एटीट्यूड, आपकी ईगो, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। आपकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन, आपकी ड्रेसिंग, आपका आई कांटेक्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। वो इमरान वाली बात बिल्कुल ठीक है कि आप हो चाहे तो 2 मिनट के अंदर अगले बंदे को कन्विंस कर लें कि भाई मुझे जॉब देना ना देना तुम्हारा नुकसान है, और ये बहुत अच्छा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम Kanza, and she's saying that should the experience be intact from one organization or it can be from 2 to 3 different places? I think इसके ऊपर आपने बात की थी कि कम से कम मिनिमम 6 months का इससे ज्यादा ही होना चाहिए एक्सपीरियंस, अदरवाइज ये Yes. एक बैड एक्सपीरियंस कंसिडर Yes, किया minimum. Yes, yes, yes. Correct. Otherwise it can be from 2 to 3 organizations if you have that kind of CV, Yes, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम that's 6 absolutely months का आपका fine. स्टे होना चाहिए। Yes, it's very important. But the question comes to a candidate: what is the problem? Why you are leaving a job every 6 months? It means you don't have a consistency in your professional life. Is the problem with you or the problem with the organization? Okay. All right. I think Imran, are you there with us? Yes, yes, I'm here. I'm here. It's resumed. Okay. The next question is again from Stylish Malik. Sir, अगर मैं पाकिस्तान में कैटेगरी रेंट आउट करने के बाद क्या UAE को लिए अप्लाई कर सकते हैं? All right. Yeah, you can do so, but you can do so. You can put your license on a rental basis and get a job. That now nobody is going to check on your personal life. It's about all your ethics. So I say that
some thousands of money or whatever you will get in a year, where you are presently not available or physically not available, how is this justified with the profession? So personally, Exactly. I will not recommend. It's your choice. It's your ethics. Yes. And I would also highly not recommend. This is यहीं पे तो हम इंटेग्रिटी की बात कर रहे हैं आप और इंटेग्रिटी ही ऊपर आपने क्वेश्चन कर दिया है क्या बात है ऑलराइट सो अच्छा बाकी क्वेश्चंस जो से हैं मुझे ऑलमोस्ट रिडंडेंट से लग रहे हैं सो मैं फाइनली क्लोजिंग की तरफ जाता हूं और बिफोर क्लोजिंग आई वांट टू टॉक अबाउट सम लाइफस्टाइल इन यूएई एंड कुवैत एज वेल कुवैत का तो थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया है ममूना ने लेकिन यूएई के थोड़ा सा इनसाइट अगर मिल जाए तो दैट वुड बी ग्रेट I think Imran is again out. Imran, can you hear us? Yes, I'm here. Yes, I can. Okay. इमरान थोड़ा सा फिजिबिलिटी और एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें यूएई का कि हाउ मच कंड्यूसिव इज द एनवायरनमेंट आपको वहाँ पे सैलरी पैकेज जो मिल रहा है उसकी बाइफर्केशन क्या होगी और इज इट इजी फॉर अ फैमिली टू सर्वाइव देयर और इवन फॉर अ सिंगल पर्सन मतलब इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें Well, a single person, it's also not easy to survive with initial salary 2,500. It depends on your lifestyle and how much money you can spend. Very simple example, I can spend even 10 dirham for my breakfast, or I can even spend 50 dirham for my breakfast. It's your choice what you want to get it. Similarly, I can stay in accommodation with 700 dirham, or I can stay even 2,000 dirham. So that initially with 2,500, it's very challenging. It's not easy. What once you start growing, probably then it can get convenient. Another important part, how far you are traveling from your residence area to your job, because that costs you your transportation as well and your time. If you are spending a lot of time and the money, it means you are not able to manage your expenses. So you will be getting a food from outside and you will be traveling so long, that also means factor. Always have your accommodation near to your working place, which can help you not to get so tired and not to spend a lot of money. With the family, at least you require minimum 10,000 dirham for a two-person to survive initially. Once your family keep growing, you have child and all, your expense definitely keep growing. So even with the two kids, it should not be less than 20,000 to survive. ओके ये बड़ा अच्छा And the है last, आपने it पॉइंट depends on दिया your है company benefits as well, giving you health insurance, giving you accommodations, and all, giving you car fuel. नहीं ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट दिया है इमरान ट्रांसपोर्टेशन का कि टाइम इज मनी वी ऑल नो दैट लेकिन यूएई के अंदर तो बहुत ज्यादा ये मैटर करेगा द मोर टाइम यू आर स्पेंडिंग ऑन योर ट्रांसपोर्टेशन आप एक्चुअली उतना टाइम अपना जो सा है वो वेस्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स Yes. अच्छा इमरान मुझे एक चीज और बताइएगा कि ये जो हम मेरे ज़हन में I had that question it skipped my mind yes आप जो बता रहे थे कि जो असिस्टेंट फार्मासिस्ट के तौर पे आते हैं उनकी जो सैलरी है वो अराउंड 2000 से 2500 दिरहम के अराउंड है तो वो आपने बोला कि दैट इज नॉट इनफ टू सर्वाइव हियर तो फिर वो कैसे सर्वाइव करेंगे No, they can survive. It's not like, as I mentioned, that I can take a breakfast for 10 dirham, I can take a breakfast 50 dirham as well. So you need to narrow down your expenses, you need to narrow down your lifestyle, and you can survive. You should not have, you will not have extra room to spend unnecessarily, at least unless you keep growing. So initially it will be challenging, no doubt. Sometimes people get sharing accommodation or family and all those things, so they can manage easily.
homemade food, accommodation is fine. So for them, it's very easy. For the female, it's not so easy. It's very difficult. I always recommend a female, if it is coming to UAE, should be having a known person where they stay, or where they should have very strong trust and confidence, where they can share all kind of problems, day-to-day issues, and get a right guidance on that. Perfect. Yeah. Thank you very much. The last question would be from both of you regarding the cultural considerations. What are the do's and what are the don'ts in UAE as well as in Kuwait? और एक एड ऑन क्वेश्चन मैं मेमोना से करना चाहूँगा कि फीमेल पर्सपेक्टिव के ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालें कि हाउ दे कैन सर्वाइव in this situation. So starting with you, Imran, cultural considerations and challenges. What are do's and what are don'ts? Well, it's very common. I can say it's very safe environment for the woman or any female who come to UAE. Very safe. There is no issue in terms of security and all. But however, as I mentioned, that a female can come to UAE probably where they know the people already, should be not so much expecting from others to help you. You should be having that person to whom you can trust each other. So that's very important. Always should have some family member if they are coming, or most of the females are coming after getting married or along with the spouse. So for them, it's very easy. Transportation, it's very convenient. That is one of the part. Then workplace is very much ethical. There is no such issue. All kind of safety protections, it's there in the safe in the workplace. So there is no issue for them. I can say currently the ratio of the female pharmacist is much higher than the male pharmacist. So you can say 20 male pharmacists and then 80 female pharmacists are working at this stage in UAE. Right. And what about racism? Yes, it depends on the company. Bigger company has a lot of control. They always look for multinational culture. Racism will not come unless you start thinking about racism. Bad things only come when you will think bad. When you respect others, people respect you. So racism is not there as openly. It can be invited, in other words. Acha, before I go to Mamoona, I have one quick question from Talha Aman. That is कि हम एक फ्रेश ग्रेजुएट के लिए क्या बेहतर है, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या हमें पहले पाकिस्तान में बैठ के अपना एक्सपीरियंस कंप्लीट कर लेना चाहिए, बाद में मूव करना चाहिए, या हमें एज अ फ्रेश ग्रेजुएट ही मूव कर जाना चाहिए और फिर वहां जाके अपना मतलब which would you recommend? Imran, can you hear me? Yes. Yes, I can hear you. So basically, I always prefer you can get a license and then come to UAE. It's more easy. Right. The income will be sufficient. You can survive and you enjoy your job. You will have less limitations. Right. Very straightforward. All right, Mamoona, please. What about the lifestyle do's and don'ts in Kuwait, and especially females के बारे में आप क्या suggest करना चाहेंगी, उनको क्या आपकी तरफ से tips and tricks I हैं? would like to mention, क्योंकि मैं बहुत कम ऐसी females को देखती हूँ कि they pursue their dreams, they just give up. बहुत जल्दी they give up और they scared to start. Like उनको लगता है कि हम पता नहीं कैसे करेंगे, so we cannot do with the kids, we cannot do at the mid career level. जब वो they are young, they are not married, they can do. Once they get married, they have so many objections in this. So मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी कि एक तो आपकी सेल्फ असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आप सेल्फ असेस करें कि आप कितने पैशनेट हैं और आपके ड्रीम्स क्या है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है. अगर आप ये करना चाहते हैं तो गो आफ्टर इट एंड यू विल गेट इट.
और चीजें ऑटोमेटिकली आपके हाथ में होती जाती हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन एंड यू नो इट्स वेरी रिस्पेक्टेबल and you're working as a doctor and as a licensed doctor, people will respect you, they will love you for that. Yes, kuch time difficult hota hai and it will go, it will pass, and just don't be scared of that 2 years to make up your whole life. So आप थोड़े से 1-2 साल स्ट्रगल कीजिए, और मैं सब फीमेल्स को बोलूंगी अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आइए प्लीज, अपने रिस्ट्रिक्शंस को अपने माइंड से हटाइए, खुद से ये आपने डिसाइड करना है. अगर कोई किस चीज पे क्रिटिसिज्म करता है तो डोंट वरी, वो एक टाइमली मैनर होता है, फिर बाद में वो खुद भी वही करेंगे जब आपको एक स्टेज पे देखेंगे. तो just don't bother anything, just come out of your comfort zone, start doing it and बस हटना नहीं है आपने. और अब नहीं करना तो कब करना है? हाँ जी, अब नहीं करना तो कब अगर करना आपने है? ये अब आज डिसाइड कर लिया तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, खली वली क्यों इतना पढ़ूं, आप बच्चों के साथ है इस तरह. सीरियसली आपके बच्चे आपके साथ हेल्प कर देते हैं. अगर कोई एक आधा, हर किसी को, इवन मुझे भी ऐसा ही प्रॉब्लम सेव करनी पड़ती है, थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, थोड़ी सीख करनी, इसलिए तो टेक्स टाइम. एंड फॉर मी इट टुक 12 years टू लाइक जस्ट टू परस्यू समथिंग दैट आई कैन गेट इन 1 year. तो ये टाइम के साथ हो जाता है, बट यू डोंट हैव टू गिव अप, यू हैव टू गो बाय इट. अगर इसमें कुछ गलत नहीं है एंड यू आर हेल्पिंग अदर्स एंड यू आर keeping in prayers, so please don't give up, start doing something, go out of your bed. आप ग्रोसरी के लिए भी जाते हैं, आप वैसे भी सारा दिन थक जाते हैं, तो आप काम करके क्यों थकते हैं? लाइक आप ये क्यों सोचते हैं आप काम करेंगे तो ज्यादा थकेंगे? आप तो शॉपिंग करके भी हम थकते हैं, तो इट्स ओके. नहीं थकते शॉपिंग करके तो थकते ही नहीं है, वो तो बस सारा दिन करवा लो, ठीक है ना. लेकिन फार्मेसी में 5 घंटे 6 घंटे खड़ा होना जो तो आप वो थोड़ा सा तकलीफ दे हो जाता है. नहीं, दिस इज really important. मैं I'm really sorry, लेकिन this is important. You need to get out of your comfort zone. आपको चीजें जो चाहिए वो प्लेट में नहीं मिलेंगी. आप अब ये वो जमाना भी नहीं है कि जिसमें आप जो है ना कहें कि मैं आई एम अ फीमेल तो मेरे डिफरेंट राइट्स हैं. आजकल तो जेंडर इक्वालिटी की बात होती है, तो जेंडर इक्वालिटी में तो फिर आपको सब कुछ करना चाहिए. एंड आई थिंक दिस शुड बी मोटिवेशनल कि अब आप उस जमाने में हैं जहाँ पे कोई प्रॉब्लम वो वाली नहीं है. कल्चर, थोड़े से कल्चरल इश्यूज हैं, और हम मुस्लिम्स हैं तो हम मुस्लिम पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे ये कंट्री. अब मैं कम टू द पॉइंट, डायरेक्टली आई विल कम टू द पॉइंट. ये मुस्लिम कंट्री है और यहाँ पे कोई इतना मतलब आपको कुछ इतनी ज्यादा बल्कि आपको एज ए रिस्पेक्ट आप देखा जाएगा, आपको एक इसकी बहुत रिस्पेक्ट है सीरियसली. जैसे आप 8 hours ड्यूटी है, लेबर लॉ है, आपको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है, यू आर अंडर देयर सर्विलेंस, यू आर अंडर देयर प्रोटेक्शन. और फिर आपकी मतलब 8 hours है, ठीक है, उसके बाद आपकी लाइफ थोड़ी डिफरेंट जरूर होती है, लेकिन इट डजंट मीन दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. मतलब दिस इज गुड टू गो. दिन में पता नहीं कितनी दुआएं लेते हैं और कितने लोगों को ट्रीट करते हैं, यू आर हेल्पिंग अदर्स, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये आपकी हेल्प की जरूरत होती है. सो यू आर प्रोडक्टिव, यू आर स्पेंडिंग योर टाइम इन अ प्रोडक्टिव वे. बाकी इट्स ओके. एंड रिगार्डिंग देयर लैंग्वेज, there is no racism here, but yes, there are priorities. Same thing I have mentioned before. अगर आपको अरबिक आती है, this is a plus point, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चेन्स हैं वो सब अरब नेशनल्स हैं और आपको उनसे कम्युनिकेट करना है, कस्टमर्स अरब्स हैं. सो इट्स नॉट रेसिज्म. you can do your work. There are some jobs that are not designed for you. There are some jobs you can do well, better than them. Because हम पाकिस्तानीज, मैं एक अच्छी बात मेंशन करूंगी कि we are very confident and we know so many things because we go through so many things. हमें सब चीजें प्लेट में नहीं मिलती हैं, हमें कल्चरल इश्यूज हैं, हमारे फैमिली इश्यूज हैं, तो हम लोग बहुत ज्यादा ट्रेंड होते हैं. We can use these skills and don't worry about the racism. Yes, language is plus, and your priorities, your skills, and how you spend the time, how you see yourself after 5 years, go after it. It will take time, and seriously you will get it. Like, time तो either way गुजर जाता है, but productive way, this is the way. Like you have to do something for someone, for yourself. बिल्कुल. और इसी के साथ जो सा है एंडिंग कमेंट्स मैं समझता हूँ कि अब दे देने चाहिए. वी हैव ऑलरेडी स्पेंट टू मच टाइम ऑन दिस एंड इट हैज बीन सो फार द मोस्ट वैल्यूएबल सेशन. बहुत सी वैल्यूएबल इंसाइट्स थी एंड बहुत सी प्रोडक्टिव चीजें जो सी हैं वो समझ आई हमें. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. मेरे दोनों गेस्ट डॉक्टर इमरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अपने बिजी रूटीन में से टाइम निकाला. एंड ममूना एज वेल, बहुत शुक्रिया. बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव
जो सी है वो आपके पास इंफॉर्मेशन थी, कंपाइल थी, आपने मेहनत की है, उनको एक जगह पे इकट्ठा किया है फॉर अस। थैंक यू सो वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू उमैद, एंडिंग थैंक यू आपने कमेंट। बुलाया, हमें चांस दिया। श्योर, नो वरीज। और ये एक अच्छा बल्कि मौका मिल गया हमें मीटअप का भी, एक अरसा दराज जो सा गुजर गया था मिले हुए, एक दूसरे को देखे हुए, बात किए हुए। सो आई रियली एंजॉयड दैट। एंडिंग कमेंट जो सा है वो मेरा यही है कि मैंने मेरे कुछ दोस्तों के साथ जो सा ना डिस्कशन हुई थी, जो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं या जो कनाडा में होते हैं, कि वहां पे फार्मासिस्ट के बैठने के लिए स्टूल तक अवेलेबल नहीं है। यू हैव टू स्टैंड ऑल द वे। आपको 6 घंटे या 8 घंटे Yes, की yes, ड्यूटी that's है, true. आप वहां पे बैठ नहीं सकते हैं, ठीक है ना, और आपको टाइम भी नहीं मिलता बैठने का। यू हैव टू वर्क कंटिन्यूसली, स्टैंडिंग कंटिन्यूसली फॉर 8 आवर्स। और वो एकदम से यहाँ से जाने वालों के लिए ना सरप्राइज होता है। Yes. तो अब मैं बस बेसिकली ना इस पॉइंट को स्ट्रेस करना चाह रहा था कि यहाँ पे चाहे मेल है चाहे फीमेल्स हैं, हमारे इवन मेल्स भी जो उनसे ना वो बहुत ही एक शाहाना अंदाज में, क्योंकि हमारा हमारा जो कल्चर है ना, हमारा जो फार्मेसी का कल्चर है यहाँ पे, वो ये है कि बस तुसी अफसर है गए हो ਤੇ ਤੁਸੀਂ टेबल चेयर लेके हो पर या कोई नुक्कर पे बैठ जाओ जाके, ठीक है ना, और बाकी सारा कुछ हम खुद संभाल लेंगे। वो फार्मेसी लड़के संभाल रहे होते हैं, मैनेजर नॉन फार्मासिस्ट संभाल रहा होता है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ जो है बाहर एग्जिस्ट करती है। बाहर फार्मासिस्ट इज ऑल इन ऑल, उसी ने चीज़ें करनी है। नो डाउट ही गेट्स हेल्प बाय द असिस्टेंट्स, लेकिन ये चीज़ एक्सपेक्ट करें आप कि आपका जो एक्चुअल जॉब डिस्क्रिप्शन है ना वो क्या है। यू शुड ओन इट, यू शुड डू इट प्राउडली, एंड दिस इज समथिंग। एक ऐसा कमेंट था जिसके ऊपर मैं ये सेशन खत्म करना चाहूँगा। अगेन थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। आप लोगों ने अगर कोई एंडिंग कमेंट्स देने हैं तो प्लीज। We have discussed already so much, but thank you very much उमैद, हमने बहुत सारी चीजें जो हम शेयर करना चाहते हैं। Yes, ठीक है इमरान, आप I प्रॉब्लम कंटिन्यू। thank you, Omad. It's a nice connection. Right. It is actually not a nice connection. The internet connection I'm talking about. Anyways, thank you very much इमरान। और मैं जो है ना लास्टली आप जितनी ऑडियंस है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, ये जो क्वेश्चंस आप लोगों ने यहाँ पे ड्रॉप किए हैं ये आपके इस सेशन के साथ डिलीट हो जाएंगे। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन DM मी, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। एंड इफ यू बी काइंड इनफ तो प्लीज फॉलो करें मुझे, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है उसको भी फॉलो करें। आई विल बी पोस्टिंग दिस होल रिकॉर्डिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल एज वेल, आप वहाँ पे भी उसका रिकॉर्डेड सेशन देख सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, जज़ाकल्लाह, फी अमानिल्लाह। थैंक यू सो मच Mamoona, thank you so much. Thank you Allah Hafiz. everyone, thank you for joining us, thank you, Assalamu alaikum.